Yes. Exercise 6.3. Question 1. Write the fraction for shaded part. Shaded part means जो कलरिंग किया हुआ है उसका फ्रैक्शन हमें लिखना है। ए यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 parts है, right? Then there are 1 2 3 4 and 5 parts are shaded. उसमें से 5 parts को शेड किया हुआ है। What we have to do, we have to write down the fraction for the shaded part. मतलब जो पार्ट शेडेड है उसका ही फ्रैक्शन आपको लिखना है। तो फ्रैक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर राइटिंग फॉर आवर इजीनेस, हमारा हमें इजी रहे उसके लिए हम ये सेंटेंस लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टोटल यू कैन ओनली राइट डाउन फॉर द फर्स्ट वन, आप सिर्फ फर्स्ट के लिए ही लिखोगे, ए के साइड में थोड़ी जगह है वहां पे आप ये सब लिखोगे, टोटल पार्ट्स, और यू कैन ओनली राइट डाउन द टोटल। कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so total parts are 9. We have to find for this shaded, so I am writing the shaded parts. 9 में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5, 5 parts are shaded. Now we have to write down the fraction for the shaded part. So fraction equals to horizontal line below the denominator में आएगा total means 9 and above numerator में आएगा shaded parts कितने हैं, so it's 5 by 9. मैम ये हमें टेक्स्ट बुक में लिखना है। हमें आप सिर्फ फर्स्ट के लिए बाकी के सारे का फ्रैक्शन आंसर प्लीज कंप्लीट। This is your homework. मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है तो आप वापस बोलिए ना। आपको ये वाला फर्स्ट के लिए लिखना है, सेकंड थर्ड बाकी सबके लिए नहीं लिखना, ओनली राइट डाउन फॉर द फर्स्ट। सॉल्विंग द C1. एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम हम अभी ज्वाइन हुए हैं तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पहले तो आप ज्वाइन हुए हो मैम। हमारा टाइम 8:45 का, में 5 मिनट लेट स्टार्ट किया, फिर भी आप ज्वाइन नहीं हुए, व्हाई? We have to write down the fraction of the shaded part. If we are going to solve the exercise 6.3, you have to be write down in your textbook. मैम हमें बस टोटल पार्ट ही लिखना है। Yes. मैम 6.3 टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। मैम Listen to me carefully, everyone. Today is the last morning that you are not joining on the time. So next time I will be, what should I do? I will log the meeting, and other students who are late comers, they will be not allowed to join the meeting. Yes, Jenny. मैंने फर्स्ट वाला ऐसे लिखा तो चलेगा? कैसे? डायरेक्ट आंसर लिखा है आपने? कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ओके मैम। मैम मैंने बस वही लिखा है, टोटल पार्ट 10। कोई बात नहीं।
मैम Count. मैम हमें 90 पेज में क्या करना है? In the circle, we are going to count now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 parts are there. How many parts are total? So total are 8 parts. We had to count the shaded parts 1, 2, 3, and the 4. So shaded parts are 4. So we have to write down the fraction for the shaded part. Below the horizontal line, total number means the 8, and above there is the shaded part, that is the 4. You can write down the 4, or you can write down like this: 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 4 and 1/2 is the answer. Both are the right answer. अगर मैम आप गूगल क्लासरूम में वीडियो भेजोगे? लिखा है तो दोनों आपके राइट आंसर होंगे. Your homework. मैम आप गूगल क्लासरूम में वीडियो भेजोगे? डेफिनेटली मैं हर बार भेजती हूँ. Yes. मैम आपने जो लिखा है हमने वैसे नहीं 5 लिखा है हमने. आप डायरेक्ट. ओके मैम. Please mute yourself. Okay. So now we are going to count. First, you can see that in the first box there are 2 parts are there. So we have to count to 2 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total are the 12 parts. From that shaded parts we have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So shaded part are 8. And what is the fraction for that? 8. Below the horizontal line 12, and above there is a shaded part, that is the 8/12. Yes. मैम Yes. हम शॉर्ट में लिखे तो चलेगा? PPSPF ऐसे लिखूंगा तो चलेगा? क्या लिखोगे? वापस से repeat करो. आपने जो टोटल पार्ट और शेडेड पार्ट किया ऐसा में लिखो. T और P और F तो P ऐसे लिखूं? चलेगा चलेगा. Color the figure to show fractions. Color the figure to show given fractions. सेकेंड में, फर्स्ट में हमें कलर दिया हुआ था, उसमें से हमने फ्रैक्शन लिखा. अब आपको क्या है, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको शेड करना है विथ यूज ऑफ.
Okay. And below that fraction is given that 8 by 12. फ्रैक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको शेष करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप फ्रैक्शन को देखोगे अच्छे से। ये आप जो डिनोमिनेटर में देख रहे हो दैट इज द 12, मतलब कि टोटल पार्ट्स जो होंगे वो 12 होने चाहिए। तो फर्स्ट काउंट करो ये 12 पार्ट्स है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this fraction is correct for this, right? Now what is the numerator? That is the shaded part. Numerator का मतलब क्या होता है, जो पार्ट शेडेड होगा वो नंबर, मतलब 8 को आपको शेड करना है। So 1 2 3 4 5 6 7 and 8 यहाँ तक आपको शेड करना है। आप अच्छे से शेडिंग करोगे। आई हैव मार्कर्स, सो आई एम अनएबल टू डू द डार्क शेडिंग। आपको भी उतना डार्क नहीं करना, एकदम परफेक्शन के साथ दिखे ऐसा शेड आप करोगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल एंड द शेडेड, जिसकी वजह से आपको पता चले कि आपने किस तरह से शेड किया हुआ है। B and C is your homework. Going to solve the D. Two by 5. Fraction is given that 2 by 5, मतलब ये रहा टोटल, ये रहा शेडेड पार्ट, राइट। अब आपको काउंट करना है कि ये टोटल 5 है, ये रहा 1 2 3 4 5। Okay, this fraction is for this one figure 5 है, that is okay. Now we have to shade 2 parts from the 5. हमें 5 में से 2 को शेड करना है। You can shade any 2. आप किसी भी 2 को शेड कर सकते हो। I am shading this one and this one also. Please mute yourself. Now, question number 3 and 4 you have to write down in your notebook. तो आप अपनी नोटबुक निकालोगे इस टाइम में। हेडिंग लिखो एक्सरसाइज 6.3 and start writing. Okay, question number 3. Right. Excuse me, ma'am. Yes. 3 1. मैम मैंने टेक्स्ट बुक में लिख दिया है तो चलेगा? Question number 3. In the notebook. If you are writing down in the textbook, then you have to again write down in your notebook. And mute yourself whenever you speak. After the completion of your work, please mute yourself. Right. Given fractions in the words. मतलब आपको फ्रैक्शन का नंबर दिया हुआ है, उसको आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है। जो हम टेक्स्ट लिखते हैं दैट इज द वर्ड्स।
2, 3. So you can write down that 2 by 3. First is that 2 by 3. First method is that with using of by words, you can write down this 2 by 3. Or you can write down. मैम आपकी स्क्रीन मुझे प्रॉपर नहीं दिख रही. 2 by 3, or you can write down 2 third. मैम मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. Maybe मैम मुझे भी नहीं दिख रही क्लियरली. Maybe there is a network issue, that's why this will be happen. 2 by 3. मैम there is no network issue. आप सुन भी तो सकते हो अच्छे से, आप सुन के भी अच्छी तरह से लिख सकते हो. If my voice is not clear or my screen is not clear, you can hear me and you can write that. First जो है 2 numerator है. What is this? मैम 3. मैम वो Kiran, please mute yourself. मैम 2 के सामने क्या लिखा है आपने? By 3. ऐसा मैंने सिर्फ 2 डॉट्स किए हैं. 2 by 3. You can write down 2 by 3. और second method है ऐसी 2 third. वैसा हम लिखते थे ना 1 third, वैसा आप लिख सकते हो 2 third. B 3 divided by मुझे पता नहीं है. 3 divided by 5. B is that आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, आप उसमें भी देख सकते हो. 3 divided by 5. क्वेश्चन 3 का B जो है 3 divided by 5. So in the fraction form you can write down 3 by 5. 3 by 5. Or you can write down 3 fifth. 3 fifth. 3 by 5 or 3 fifth. Solving the E, C and D is your homework. 7 divided by 9. जो हमारा E है 7 divided by 9 है. So how can you write down? No, not book में. 7 by 9. 7 by 9, or you can write 7 9. In the exam you can write down from 1. दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हो. Question number 4. Right. मैम डी हमारा होमवर्क है. ये 3 ये मैंने क्लास वर्क में दिया है. होमवर्क है C and D. C and D. C and D. Yes.
यस एक्सरसाइज 6.3 में मैंने टेक्स्ट बुक में सभी आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 3, 4 एंड 5 जो है वही आपको नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट सेकंड जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 4। राइट द गिवन फ्रैक्शन इन द फिगर्स। आपको वर्ड्स में दिए हैं, उसको आपको फिगर्स में कन्वर्ट करना है। ए 1 8 1 8। फर्स्ट जो वर्ड होगा वो न्यूमरेटर होगा, सेकंड वर्ड जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 मतलब आप अपर पोर्शन में लिखोगे 1, न्यूमरेटर में लिखोगे 1। 8 मतलब डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 8। सी बी इज योर होमवर्क। 5 6। फर्स्ट वर्ड है 5, सो न्यूमरेटर में आएगा 5 और सेकंड वर्ड है 6, तो डिनोमिनेटर में आएगा 6। डी 8 12 8 12। मैम यस ये क्या इसमें क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको वर्ड दिए हुए हैं, फ्रैक्शन वर्ड्स में दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फ्रैक्शन आपको नंबर फॉर्म में दिए थे तो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया था, राइट? क्योंकि वो पे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको फ्रैक्शन वर्ड्स में लिखने हैं, तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन नंबर से वर्ड्स में कन्वर्ट किए, उनको वर्ड्स में लिखा। लेकिन अब आपको फ्रैक्शन वर्ड्स में दिए हुए हैं, उसको कन्वर्ट करने हैं नंबर्स। दैट्स इट। ओके ओके मैम। 12। सो फर्स्ट न्यूमरेटर में आएगा 8। फर्स्ट जो होगा वो न्यूमरेटर होगा, सेकंड जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। 12 12 का मतलब क्या हुआ, 12। सो मैम बाय 12। यस इसे नोटबुक में लिखना है या नोटबुक टेक्स्ट बुक दोनों में लिखना है? नोटबुक क्लियरली मैंने बोल दिया था। And suggest to every student, whenever I give one instruction, then every student have to be listen that carefully. मैम Yes. मैम ऊपर में 18 लिखना है और नीचे में क्या लिखना है? 5 6 है, तो न्यूमरेटर में 5 लिखो, डिनोमिनेटर में 6 लिखो। आप वर्ड देखो, फर्स्ट 5 है, सेकंड 6 है, तो न्यूमरेटर जो होगा वो 5 होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो 6 होगा। दैट्स इट। Question 5 also you have to write down in your notebook, but direct answer. उसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है। Action. मैम Yes. ऐसे में लिखना है? आपको नोटबुक में लिखना है डायरेक्ट आंसर।
नो मैम वो क्वेश्चन 4 का क्या लिखना है? ऐसे क्वेश्चन 4 का लिखना है। हाँ मैम मैम हमको क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे बाद में आंसर लिखे तो चलेगा? पर है आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, मैंने ऐसा ही बोला, तो आपको मेरे इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू बी राइट डाउन डायरेक्ट आंसर्स, नो नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन। आई वांट टू मैम कौन सा चैप्टर है? I don't want to listen your parents conversation. I don't want to listen your parents conversation, so tell to your parents to leave us alone or mute yourself if you want to talk with your parent. ओके ये जो है आपको दिया हुआ है, फर्स्टली ऑरेंजेस आर देयर। मैम यस कौन सा चैप्टर है? व्हाट? कौन सा चैप्टर है ये? क्या बोले, वापस से बोलो तो। कौन सा चैप्टर है ये? क्यों आपने पहले से वीडियो नहीं किया देखा? हु इज दिस रौनक? मैं ट्यूशन में था। So you can see that in the A there are oranges given in your textbook. You can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oranges are there, right? From that 1, 2, 3, 4, 5 and 6 oranges are shaded, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 are unshaded. Means orange color किया हुआ है, but I say that it's a shade. आप shaded words का use करोगे in the fraction. You cannot say that colored and uncolored. Shaded for the color and for the uncolored that is a unshaded. So first of all we are writing the total number of oranges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So total are 13 oranges. Total oranges 13. From that, how many are shaded? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shaded oranges are 6. And unshaded 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Unshaded oranges are. मैम नोटबुक में लिखना है। हाँ मैम क्वेश्चन 5 नोटबुक में लिखना है। क्या? Yes. Okay, so total orange is 13, shaded orange is 6, unshaded are 7. Now, what is the question? You have to write down the fraction for the shaded as well as unshaded part. आपको shaded और unshaded दोनों के लिए fraction लिखना है. So first, I am writing for the shaded fraction. शेडेड फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जो ऑरेंजेस कलर है उसका फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो पहले हम फ्रैक्शन के लिए लिखते हैं नीचे टोटल और ऊपर लिखते हैं शेडेड पार्ट्स। सो हाउ मेनी शेडेड आर देयर? यू कैन सी हियर शेडेड ऑरेंजेस आर 6 and how many are total? Total is here, there is a 13. So fraction for the shaded is 6 by 30. Fraction for the shaded is 6 by 30. Now unshaded fraction. Unshaded fraction equals to unshaded parts
unshaded oranges divided by total oranges. So how many are the unshaded? There are 7 are unshaded and total are 30. So unshaded orange fraction is 7 by 30 and shaded oranges fraction is 6 by 30. Now going to solve the B. मैम कंप्यूटर का क्लास कब है? नहीं सर इसके बाद मैम आपने तो कहा था कि 9:30. Yes, I know, Hayashi, but we have to complete the exercise. This is the last question. अभी तो 9:30 हुए हैं. Use the time. I'm writing in this piece. I know that there will be a computer class. In the B, there are the apples are given. So now we have to write down first 3 lines. Total apples. Total कितने apples है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12 apples are there. Now we have to write down the shaded apples. How many apples are shaded? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 are shaded. Unshaded 1, 2, 3 and 4 are unshaded. Now we are going to write down the fraction. Fraction for shaded equals to shaded part divided by total parts. I will be share the snap of this in the group, so don't worry for that. Shaded कितने हैं? 8 and total are 12. Then fraction for unshaded part divided by total parts. Total are 12 and unshaded are 4. Okay, so I will be share the snap of this last question in the group. You can write down from that, and I am going to